So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss Cripps India Mission and Quit India Movement. Sorry, Cripps Mission and Quit India Movement because we have already discussed non-cooperation movement and civil disobedience movement. So basically, this is actually, we are doing it in sequence so that it would be easy for you to understand things. And that is why I have earlier, I had started with Gandhiji's Satyagraha in India. That is what, coming back from South Africa. Then we had discussed about Rowlatt Satyagraha or Jallianwala Bagh massacre. Then we had discussed about non-cooperation movement. Then we discussed about civil disobedience movement yesterday. And today I am actually discussing the Cripps Mission and Quit India movement. Okay. So these all are in sequence. And I hope you will appreciate why we are discussing it, because we have already seen previous year question on modern Indian history topic. And that is why I'm discussing it. Yes. Good afternoon. Welcome to the class. Am I audible, visible? Is everything fine? Awaaz clear hai? Yes. Good afternoon, Krishi Sachdeva. Welcome to the class. Voice is clear. Slide is visible. I think everything is fine. If yes, तब एक बार आप comments में yes लिख दो. Yes. Okay. Please, those who have not subscribed to the channel, please subscribe to our channel. Go to the live section. अब live section में जाओगे देखो ये आज है का class है. Yesterday we had discussed about civil disobedience movement, right? है ना? So now it follows this. इसके बाद ये वाली class होगी, of course. I am doing it in a sequence order so that it would be easy for you to understand. और अगर आप उससे पहले देखोगे, we had discussed about Rowlatt Satyagraha, Rowlatt Act, Jallianwala Bagh massacre, etc. also. One more thing, we have made a separate playlist for modern Indian history. ठीक है, तो आप इसमें view for playlist पे click करो, you will get all those previous videos. तो at least अगर आपको देखना तो यहाँ से minimum यहाँ से देखो गांधी सत्याग्रह, then Jallianwala Bagh massacre, then non-cooperation movement. इसके बाद इसमें we will add civil disobedience movement also in this playlist. उसके बाद Government of India Act 1935. This is also very important. I have taken a class and this is also very, very important. ठीक है. So these are the playlist about this. Now, अब हम लोग जब भी शुरू करेंगे recap से, before that, first I'll show you the previous year question. I hope you all are aware. देखो civil disobedience movement पे PYQ आया हुआ है ना? देख रहे हो? We had discussed it in the last class. Yes, that is what you should know. Then Jallianwala Bagh massacre पे PYQ आ चुका है. Previous year there have been question. Then इस पर एक आया है ना, Constituent Assembly debates पर we have seen questions. Let's start with quick recap. So first of all, recap was first Gandhiji came back from South Africa on 9th January 1915. Okay, back from South Africa. Yes, this we had done. उसके बाद क्या होता है, देखो मैं सीक्वेंस इसलिए बता रहा हूँ ताकि तभी आप समझ पाओगे, ठीक है? अदरवाइज अगर बीच से स्टार्ट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा समझना. Then we had seen 1917 first सत्याग्रह गांधी जी कहाँ हुआ था? Please tell me. Please write in the chat. First सत्याग्रह गांधी जी, चंपारण सत्याग्रह. Then 1919 first all India सत्याग्रह, where it is? Please tell me in the chat. First all India सत्याग्रह, Rowlatt Act, Rowlatt सत्याग्रह है ना. Then उसके बाद क्या unfortunate Jallianwala Bagh massacre happens. After that we have seen what? We have seen prominent in 1920. We had seen non-cooperation Khilafat movement or non-cooperation movement. Yes, very good. People are writing, है ना. उसके बाद एक और जो prominent event which we have seen was 1929, 1930. 1929 with Poon Swaraj resolution. PS I am writing. Then 1930 we have seen civil disobedience movement, and it got stopped. How civil disobedience movement was stopped? So 1930 say or almost March 1931 तक ये चला. This is civil disobedience movement started by Dandi March, ended in March 31 with Karachi session, or what we call it as Gandhi-Irwin Pact. Yes. Okay. Now Gandhi-Irwin Pact in the last class we had discussed. तो जब हम लोग last class में discuss कर रहे थे, why I'm discussing it because you will understand the sequence. तो sequence समझना जरूरी है. Otherwise ऐसे हिस्ट्री रटने से कोई फायदा नहीं होता है ना. You have to understand it. So जो civil disobedience movement में I was discussing this chapter 11 class 12 NCERT book. I have told you that सबसे पहले इसमें discussion था non-cooperation movement. This also we have done. Civil disobedience movement which talked about this, है ना. तो we had discussed last class में ये discuss किया था कि civil disobedience movement से just पहले we had seen December 1929 Lahore session
which talked about Poon Swaraj resolution, है ना, Lahore session of Indian National Congress, and talked about Poon Swaraj resolution. Yes. After that, what happened? Dandi March started, है ना? So Gandhi ji's Dandi March started. उसके बाद जो Dandi March we have already discussed it, so I'm not going in that detail, but I'm idea दे रहे, है ना? March April 1930. Then ये चलता है next year March 1931 तक. What happens on March 1931? So March 1931 Gandhi Irwin Pact happens. इसमें एक बात कही जाती है, उसमें क्या आता है? गांधी जी agrees for this to attend second round table conference. Yes, है ना? One of the reason, फिर हमने ये भी बताया था ये कि withdrawal of prosecution against all those except those involved in convicted of political violence, or except those convicted of violence. इसमें मैंने बताया भी था कि भगत सिंह was hanged etc. and all these things we had discussed. तो अब हुआ ये था कि यहाँ से बात शुरू होगी. We will start from here. So in Gandhi Irwin Pact, I have told you that there are 3 roundtable conferences in London: RTC 1, RTC 2, and RTC 3. In which of them Gandhi ji participated? Please tell me. Or all of them used to happen around November 1930, 31, and 32. किसने participate किया था गांधी जी? Second one, yes, Siddhi Vij, right? हाँ. So he participated in the second one. इसलिए कि गांधी इरविन पैक्ट में बात हुई थी कि आपको पार्टिसिपेट करना है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन में. तो गांधी जी ने कहा ठीक है चलते हैं. So he went there for second round table conference, but the talk was not successful. ठीक है, अब यहाँ से समझना है. Now here we are talking about this. The problem with separate electorates. Gandhi ji goes to second round table conference, but Gandhi ji opposed separate electorates for depressed classes. For depressed classes, but British were willing to give, and in fact Bhimrao Ambedkar also wanted separate electorates. अब आप पूछोगे सर what is separate electorates, what is depressed classes, can you please explain in detail? So basically I have scheduled a class on Monday 3 p.m. discussing about this Pune Pact. This is all about, it's called Pune Pact and McDonnell Award कहते हैं इसको, McDonnell Award, where the separate electorates were given to the depressed classes. उसके against Gandhi ji sat on fast and to death in Pune also later on. तो ये वाला जो aspect है, this I will discuss it on Monday 3 p.m. ठीक है, Pune Pact and McDonnell Award. Okay. तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ? Currently what I am discussing. So currently I am saying कि हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे and we will discuss about 1942 Cripps Mission. ठीक है, ये वाला को Pune Pact and McDonnell. मैं आपको आइडिया दे दिया हूँ. ठीक है, I have given you an idea till here. And please, when we will be discussing Monday 3 p.m. we'll be having a session on Pune Pact and McDonnell Award. We will start from there. ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे. Now let's move further. उसके बाद क्या होता है, ये मैंने आपको बता दी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है इनकंक्लूसिव रहती है, बिकॉज गांधी जी वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, है ना. तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में होती है. Gandhi ji goes there, but it was not successful. इसको हम लोग separately discuss करेंगे. Depressed classes, what are the why did Gandhi ji raised concern against separate electorates for depressed classes? ठीक है, so we'll discuss it separately. है ना, देखो Gandhi Irwin Pact सभी NCERT book में लिखा हुआ है. All are mentioned it. So if you watch my classes, of course NCERT book will become very easy. ठीक है. Okay, उसके बाद क्या होता है 1930, we were talking about 1931-32. उसके बाद Government of India Act 1935 आता, very very important. And it brings a sort of a representative government where the political parties can fight election at state level and can have their ministers and chief minister. So out of 11 provinces, Congress formed government in 8 provinces in 1937 election, which was held under Government of India Act 1935. Okay, इस पर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है. Go to the playlist. This playlist में नीचे जाओ, इसमें नीचे जाना. This I have made already a video, Government of India Act 1935. Where there was a provision for responsible government, means state level पर there will be government elections and you can have your own chief minister, ministers. So 1935 बाद 1937 में elections happened and there were 11 provinces or British India provinces, out of which 8 में Congress government is there. Congress forms the government. ये लिखा है ना. This I have already taught in this class, Government of India Act 1935. Okay, so till now everything is clear. समझ में आ रहा है?
मतलब हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना, सीक्वेंस वाइज, ऑर्डर वाइज, ताकि आपको लाइक अंडरस्टैंडिंग में इजी हो. दैट इज व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू मेक लाइक दिस. इज एवरीथिंग क्लियर? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Is everything clear till now? Okay. Now let's move on further, है ना. अब देखो, can anyone tell me कि World War II कब होता है? When do we have World War II? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है. We have reached here. World War II कब होता है? Because I hope you understand the domestic politics is very much linked with the international politics, है ना. So it is from 1939 to 1945, है ना. So ऊपर में डेट लिखा हुआ अभी September 1939. And I hope you are aware. So there were two parties. World War II में there were two parties. तो आपको ये देखो, this is very important. Cripps Mission is very much linked with the World War. ठीक है. अगर आप आइसोलेशन में पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे कि सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री पढ़े, ऐसा नहीं होता है ना. Because when you read India's history, it was impacted by world history. तो आपको लिंक करके ही पढ़ना होगा, then you will understand it conceptually. तो होता क्या, एक अलाइड पावर होते हैं, इसमें होते हैं, देखो ये जोसेफ स्टालिन है, ये यूएसएसआर के फ्लैग लगा हुआ है ना. यूएसएसआर मतलब एट दैट टाइम लाइक प्री रशिया, है ना. इट वाज रशिया बैक देन. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये यूएस के थे, है ना. यूएस का फ्लैग भी है. विंस्टन चर्चिल ये यूके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. एंड चियांग काई शेक उस वक्त चाइना था, बिफोर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन से पहले की बात है ये. 1949 चाइनीज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन केम. सो बिफोर दैट वी आर टॉकिंग, है ना. Then Axis power पे कौन थे? Three people: Adolf Hitler from Germany, Hiroto from Japan, and Benito Mussolini from Italy. Okay, he was from fascist party and he was from Nazi party. I hope you all are aware. अब देखो होता क्या, देखो ब्रिटिश इधर है और एक्सेस पावर इधर है. Okay, is it clear? I think this much is clear. Now you have to understand one thing. देखो, this is India. देखो अभी ये जर्मनी रफली इतना है. ओके, देखो फाइनली लास्ट में जो वर्ल्ड वॉर 1 है वो इस पार्टी ने जीता. द लेफ्ट पार्टी वन इट, दे लॉस्ट इट. ओके, बट देखो अब मैं बताता हूं कैसे था. 1939 से लेकर के 1942 तक इनका चल रहा था. एक्सेस पावर वेर वेरी मच अहेड. मतलब ऐसा फील हो रहा था कि दे विल लूज. देयर वाज द फीलिंग दैट द लेफ्ट पार्टी, द अलाइज, है ना, ये वाली पार्टी जो है, this one, the allies will lose and the axis power will win. This was the scenario around 1940, 41, 42. Okay, उस वक्त ऐसा फील हो रहा था 41, 42 के आसपास, जब वर्ल्ड वॉर के बीच का समय था, तो ऐसा लग रहा था कि जो एक्सिस पावर है, जो एडोल्फ हिटलर है, हिरोटो और बेनेटो मुसोलिनी की पार्टी है, ये लोग जीत जाएंगे वर्ल्ड वॉर 2. Okay, so now imagine yourself in 1942, because today's class is centered around that. ठीक है, अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ. देखो, let me show. उस टाइम पर इटली, जर्मनी और जापान, ये तीनों एक साथ थे. एंड दीस थ्री वर कॉल्ड एज एक्सिस पावर. सो ठीक है ना. जर्मनी से हिटलर, इटली से मुसोलिनी एंड हिरोतो फ्रॉम जापान. ठीक है. नाउ सी 1942. अब 1942 देखो आज का जर्मनी बस इतना सा है. लेट मी शो विद सम अदर कलर. टुडेस जर्मनी इज दिस मच ओनली. बट अब देखो 1942 में जर्मनी कितना बड़ा हो गया. कैन यू सी इट? सी इट केयरफुली. जर्मनी रीच, है ना. तो ये इटली था, मतलब जो जर्मन इटली जो एक्सिस पावर है, फ्रांस का पूरा नीचे वाली गवर्नमेंट छोड़िए, ऊपर पूरा फ्रांस का ये वाला हिस्सा आप देख लो, पूरा नॉर्वे, फिनलैंड, रशिया का ये वाला हिस्सा पूरा, ऑलमोस्ट यूरोप पूरा जो है इनके पास चला गया. इनके पास एक्सेस पावर. इज इट क्लियर? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? यस और नो? ठीक है ना. जो अलाइज थे उनकी हालत खराब हुई. तो ये इंग्लैंड थे, ब्रिटेन. तो 1942 में these were actually very much in panic, है ना. तो इसलिए that is why I'm saying, जब भी आप क्रिप्स मिशन पढ़ो या क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ो, you have to understand it in वर्ल्ड वॉर के कॉन्सेप्ट में, है ना. अदरवाइज ऐसे सोलो में तो इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती. ठीक है. अब क्या हुआ, तो जब 1942 में इन लोगों की हालत खराब थी बेसिकली. मतलब अमेरिका तो अलग था, तो उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होता ना, बट ऑफ कोर्स यूके वगैरह तो एकदम सामने था ना, यूरोप का हिस्सा. एंड they had captured almost all Europe, I would say 70-80% यूरोप.
कब की बात बोले 1942, मिडिल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ये 45 तो खत्म हो गया, बट मिडिल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, सो कीप दिस इन माइंड. सो नाउ व्हाट विल द ब्रिटिश वांट? ब्रिटिश को क्या चाहिए होगा इस टाइम पर, जब ऐसी हालत होगी तो क्या चाहिए होगा? यू नीड सपोर्ट, राइट? है ना भाई, तो वैसी हालत है तो यू नीड सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज. So they realize that yes, they are ruling in India also. So let's take the support of Indians. Okay, है ना? ये support चाहते हैं तो चलो Indians की support लो. So then actually there's a prime minister, of course, जो Winston Churchill के लोग यहाँ बात कर रहे थे, है ना? यहाँ पे देखो कौन है? Winston Churchill is there. So Winston Churchill is the prime minister from Conservative Party. He sends 3-member delegation. ठीक है, उसमें होते हैं Sir Stafford Cripps, Lord Patrick Lawrence, and A.V. Alexander. This is the three. This is actually the 3 people who were member of Cripps Mission. Okay. So they were sent to India. Why? Just to talk, convince people, talk कि चलो भाई थोड़ा support कर दो, etc. and all. And इसीलिए Prime Minister ने भेजा भी था. Like he got convinced that okay, let's send them so that we need and try and forge a compromise with Gandhi ji and the Congress. काहे भाई काहे compromise कर रहे हैं? Why you're talking about talks and all? British तो मतलब they used to believe कि they are more superior, etc. But yes, जब मतलब हालत खराब होती है, when there is problem, then of course you come and talk for that. है ना कि चलो बात करते हैं, है ना? लेकिन talks brought however after the Congress stated it has helped, etc. and all, है ना? हाँ, इसमें क्या लिखा? Talks broke down. यानी बात पूरी तरह बनी नहीं थी. क्यों? However, बन नहीं पाई Cripps Mission में, and the reason was very simple, that Congress insisted that if we are to support British against Axis power, then Viceroy had to first appoint an Indian as the Defense Minister and Executive Council. मतलब ये हुआ कि अगर ठीक है भाई हम लोग सपोर्ट कर देंगे, अगर आप ये कह रहे हो, if you are telling us कि Indians should support British against Axis power, मतलब Axis मतलब वही Hitler and Italy के Mussolini and all, then you have to first appoint an Indian as the Defense Minister and Executive Council. जो Viceroy की Executive Council होती थी, where only the white people at that time were there. Later on कुछ Indians आए थे, but yes, mostly majorly there were white people in this Viceroy's Executive Council. So Gandhi ji and Congress demanded that you should appoint our Defense Minister. यानी हमारे Indian Defense Minister होना चाहिए, तब हम ये बात मानेंगे. So of course they will not allow it, etc. है ना? So अब हम लोग क्रिप्स मिशन को थोड़ा सा जानते हैं. तो क्या है? What are these things? तो पहले तो ये बोलते हैं कि चलो भाई हम लोग आते हैं. Cripps came and he tried to convince Indian. कब आए? March 1942. Why? Because Second World War हो रहा था and the Allied powers were very much desperate. They needed support because Axis power पूरा full form में था उस टाइम पर. ठीक है? अब क्या है? तो first thing is dominion status. ठीक है भाई? So dominion status में क्या है कि भाई after the war we will give you dominion status. Dominion status मतलब देखो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कब आया? जनवरी 1930 या दिसंबर 19 ना? पूर्ण स्वराज means we demanded complete independence. Yes. यहाँ पे बात हो रही है डोमिनियन स्टेटस देंगे. ब्रिटिश ने कहा डोमिनियन स्टेटस मतलब होता है समथिंग वी विल गिव सम मोर अथॉरिटी, मतलब आप पूरी तरह इंडिपेंडेंस नहीं देंगे. फर्स्ट थिंग, वी विल नॉट गिव कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वी विल गिव सम सॉर्ट ऑफ डोमिनियन स्टेटस वेयर वी विल गिव सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी एटसेट्रा. ऐसे घुमा फिरा के बात कही जाती नहीं है. एसोसिएटेड विद यूके अदर डोमिनियंस इक्वल इन एवरी एस्पेक्ट डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स मींस वी विल गिव यू सम ऑटोनॉमी बट नॉट इंडिपेंडेंस. आफ्टर द वॉर वो भी बोला कि जंग के बाद, अभी आप हमको सपोर्ट करो, जंग के बाद हमको दे देंगे. सो भाई बाद में क्या होगा नो वन नोस, है ना? So that is what, so dominion status मतलब होता है कि it refers to a state of self governing autonomy within the empire. ठीक है? हाँ, वो dominion status जो एग्जांपल जो I think आयरलैंड वगैरह के एग्जांपल से कंपेयर करते हैं. I'm not sure about Canada और ऑस्ट्रेलिया में क्या टर्म यूज करते हैं, but हाँ something similar to that. मतलब कि आप मेरे अंडर में रहोगे लेकिन हम आपको ऑटोनॉमी कुछ हद तक दे देंगे. Okay, but we were asking for what? In 1942 में आके कह रहे dominion status and we had already said पूर्ण स्वराज कि हमको फुल ऑटोनॉमी चाहिए. ये सब आधा अधूरा नहीं, है ना? So that is dominion status. Second thing they say is we'll set up a constitution making body. चलो भाई वो इरादा करते हैं कि मैं constituent assembly बना दूंगा. This is what they have said after the war. कि अभी आप सपोर्ट कर लो, please support us during the war. We are not in a very good situation. Although they might not have said it, लेकिन सच्चाई तो बाद में ये पता चली थी कि उस वक्त अच्छी सिचुएशन नहीं थी.
So they might have come and they tried to convince Indians that please support us during the war, and we will make a constitution making body after the war. जंग के बाद हम constituent assembly बना देंगे आपको. उसमें क्या है, whose members would be elected by provincial legislative assembly and nominated by ruler of princely states. अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? I hope you all are aware कि ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में, दो टाइप में था. I hope you all are aware of that. जो जैसे येलो वाला है, जैसे ये वाला है, ये कौन सा प्रोविंसेस था, उसको कहते हैं ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, जहां इलेक्शन हुआ था, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस. उसमें 1937 इलेक्शन 11 जगह था जहां इलेक्शन हुआ था. बाकी जो येलो वगैरह सब प्रिंसली स्टेट्स है, जो राजा होते थे, लोकल राजा. सो प्रिंसली स्टेट्स जो है वो अपने नॉमिनेट करके भेजेंगे राजा, एंड किंग विल सेंड हिज ओन नॉमिनेशन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में चूंकि इलेक्शन होता था, लेजिस्लेटिव असेंबली था, सो दे विल इलेक्ट मेंबर्स टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जो कि अभी भी इन रियलिटी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस वाज द केस. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बनी थी, उसमें यही था कि प्रिंसली स्टेट्स ने नॉमिनेशन भेजा था. इन इलेक्शन नहीं हुआ था बिकॉज राजा थे, राजा ने अपना नुमाइंदा भेज दिया. यू गॉट इट? सो प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेटेड देयर मेंबर्स टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जहां इलेक्शन हो सकता था लेजिस्लेटिव असेंबली का, है ना, सो द एमएलएस और एट दैट टाइम व्हाट वी कॉल इट एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव provincial legislature, they used to elect people for constituent assembly. ठीक है, तो ये गौर से पढ़ना कि अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा है, इसका मतलब है कि ये ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की बात हो रही जहां इलेक्शन होता था. ठीक है, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, तो यहाँ इलेक्शन से भेजा जाएगा. और प्रिंसली स्टेट्स किंग के कंट्रोल में होता था, तो यहाँ नॉमिनेट किंग डायरेक्टली नॉमिनेट कर देगा बिकॉज किंग डज नॉट बिलीव इन इलेक्शन. ठीक है, और रियलिटी में ये लोगों ने कहा था, इरादा किया था कि क्रिप्स मिशन में ऐसा होगा, दिस विल बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ऑल्दो 1942 के बाद नहीं बना, ये बना 1946 में, बट स्टिल द सेटअप वाज समथिंग सिमिलर. So 1946 में the Constituent Assembly was made. It was formed as a result of an elected members from provincial legislative assembly and nominated members from princely states. ठीक है, मैंने Constituent Assembly पे भी क्लास लिया है. I've taken the class, you can watch it. So खैर इन लोगों ने ये कहा कि हम लोग जो है Constituent Assembly making body यानी Constituent Assembly बनाएंगे after the war is over, है ना, and that would be there'll be Indians who will draft the constitution etc. ठीक है. थर्ड चीज इन्होंने कहा कि any British province unwilling to accept the new constitution can choose not to join and frame its own constitution. मतलब इन्होंने एक indirectly they supported because there was the rise of demand of Pakistan. So indirectly they supported the demand of Pakistan. कहता ठीक है, जिस प्रोविंस को नहीं पसंद है कि वो नया कॉन्स्टिट्यूशन वो अपना अलग बना ले, हम लोग सपोर्ट करेंगे. So this thing was also of course not liked by Congress and Gandhi ji etc. You are talking about this. And indirectly अलग है, डायरेक्ट वर्ड नहीं लिखा होता, but yes of course that was what they were referring to. So गांधी जी ने उसको क्या रिस्पांस में कहा? So गांधी जी said that it is a post dated check drawn upon a failing bank. ये बहुत फेमस कोट है, कभी ये पूछा जाता है कि this statement was given by गांधी जी in which context? Cripps Mission. तो जो क्रिप्स मिशन है, जो तीन बड़ी बातें कही गई थी, तीनों को रिजेक्ट कर दिया गया, तीन जो मेन पॉइंट्स थे. ओके, गांधी जी सेड कि पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ फेलिंग बैंक है, यानी ऐसा बैंक जो डूब रहा है उस पर से चेक ड्रॉ किया गया हो, और वो भी पुरानी डेट पर, है ना. सो मतलब कहने का तरीका है कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट. ओके, दैट इज व्हाट इट हैपेंड. सो क्यों रिजेक्ट किया? पहली बात तो हाँ वही कि आप जो बोल रहे हैं कि प्रोविंस जो है ऑप्ट आउट हो जाएंगे, मतलब यू आर रेफरिंग परहैप्स यू आर सपोर्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द आइडिया ऑफ पाकिस्तान. और दूसरी बात की डोमिनियन स्टेटस क्या होता है भाई? What is dominant status? Now we are asking for Purn Swaraj, complete independence. If you guarantee us complete independence, we will support. ठीक है, ये सब क्या होता है? We wanted full control of defense. मैंने बताया कि appoint our Indian defense minister in Viceroy Executive Council. हमारे defense minister को appoint कीजिए, है ना? So basically, Congress Working Committee rejected Cripps' proposal. In fact, Muslim League had also rejected it. So they because they said कि we want explicit support for Pakistan. So of course that was also not given explicitly. So both had actually rejected it. So bottom line हुआ कि Cripps Mission was rejected. This was brought in March 1942, but it was rejected by the Congress. Okay? Till now is it clear? Is it clear? See, March 1942 में आते हैं. क्यों आते हैं? Why they come? Because 1942 में the Axis power were very much powerful.
है ना. The Germany, Italy, and Japan were very much ahead. They had captured almost the entire Europe. So British was in panic and all, and they were the British Prime Minister Winston Churchill sent Cripps Mission to India to convince them to support us in the war, etc. And what are the points? The points that were given by Cripps Mission was not liked by Gandhiji and Indians, and they rejected it. And after that, a movement was started. And you have to tell me, it is written on the thumbnail also, so at least you should be answering it, है ना. तो फिर क्या हुआ, इसको रिजेक्ट करने के लिए फिर गांधी जी ने क्या लॉन्च किया, क्विट इंडिया मूवमेंट. क्यों, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. देखो भाई, 1929 और 30 में पूर्ण स्वराज की बात हो रही है. पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, और यहां पर आके आप क्रिप्स बोल रहे कि नहीं हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, तो बेईमानी ना हो गई. वी विल नॉट टेक डोमिनियन स्टेटस. तो अब क्या बात होगी कि नहीं हम नहीं मानेंगे, आप जाओ, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना. इसी को दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट कि नहीं भाई कोई डोमिनियन कुछ नहीं होता है, to give us complete independence. So that is why Quit India movement was started in 1942. So ये पूछा जाता है कि Quit India movement was formed as a result of failure of which mission? So the answer is Cripps Mission. ठीक है, that is what you should know. So Quit India movement कब start हुआ? Yes, Gandhi ji gave the slogan "Do or die," right? Rishi Sateva, right? Very good. So कब start हुआ बताइए तो. इतना मैंने हिंट दे दिया. यस, कृषि सचदेवा, यू आर राइट. 8 अगस्त 1942, वेरी इंपॉर्टेंट. बी इज द राइट आंसर. क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई. आपने ये नाम सुना है, अगस्त क्रांति? I think if I'm not wrong, there is a train also which connects Mumbai and Delhi. Let me check. Agast Kranti Express. It's a train also. Agast Kranti Rajdhani Express is a train that connects Mumbai Central with Hazrat Nizamuddin. Yes, I was right. So Agast Kranti, तो नाम आपने सुना होगा, I'm sure. That is the Agast Kranti. Quit India movement को कहते हैं Agast Kranti. Yes, Agast Kranti is a train also which connects Delhi with Mumbai. ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो, अगस्त क्रांति, ये तो है. सो व्हाट हैपेंड वाज, देखो यहाँ लिखा है एनसीईआरटी बुक आई एम शोइंग. आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, साफ लिखा है, गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च हिज थर्ड मेजर मूवमेंट. मतलब थर्ड इसलिए करें नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्विट इंडिया को थर्ड मेजर बताया जा रहा है. ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह को बहुत भी मेजर में नहीं काउंट किया जाता है, तो इसलिए थर्ड लिख रहे हैं. ठीक है, दिस वाज क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942. गांधी जी वो, अच्छा एक्चुअली क्या हुआ जब दे स्टार्टेड इट ऑन 8 अगस्त, तो पता है क्या, पहले ही दिन सब फर्स्ट या सेकंड डे सारे लीडर अरेस्ट हो गए थे, यू नो. ऑल द इंपॉर्टेंट लीडर्स वर अरेस्टेड. तो एक तरह से ना लीडरलेस हो गया मूवमेंट. मतलब शुरू के पहले ही दूसरे दिन सब पुलिस ने धड़ाधड़ अरेस्ट कर लिया, ब्रिटिश पुलिस. ओके, दैट इज व्हाट यू शुड नो. सो जेपी नारायण वगैरह उसी टाइम पर थे, यंग थे. लेटर ऑन जेपी नारायण का एक मूवमेंट चला था 1974 में, जेपी मूवमेंट अगेंस्ट इंदिरा गांधी जी. I hope you are aware of that. So at that time, JP Jayaprakash Narayan was very young. Okay, Quit India was genuinely a mass movement, है ना, and there we had seen support of large sections. अब देख सकते हो फोटो वगैरह में भी, और उसमें वुमेन्स पार्टिसिपेशन भी देखा गया. ठीक है, Quit India movement में we had seen huge women's participation also. Okay, 8 August 1942, Gandhi ji gave the slogan "Do or die." This is also very very important. कि कौन से, in which movement Gandhi ji gave the slogan "Do or die"? So the answer is Quit India movement. देखो ये स्टार्ट हुआ था मुंबई बॉम्बे से, ग्वालियर टैंक मुंबई से. That is why there is a railway train which connects Mumbai with Delhi called as Agast Kranti Express. ठीक है, अब देखो लॉर्ड लिंथगो जो वाइसरॉय थे, उन्होंने क्या कहा, बाय फार द मोस्ट सीरियस रेबेलियन सिंस 1857. बिकॉज 1857 में ब्रिटिश को बहुत जोर झटका लगा था. दे हैड सीन अ स्ट्रांग एक्चुअली रिवॉल्ट. तो उन्होंने ये कहा वाइसरॉय ने कि 1857 के बाद शायद ये सबसे जोरदार प्रोटेस्ट या रेबेलियन था. दैट इज व्हाट द इंपैक्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज. बट दे ट्राई टू सप्रेस इट. तो पूरा अरेस्ट करना शुरू कर दिया एक लाइन से सबको.
so they started order, है ना. तो ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने क्या कहा था क्विट इंडिया मूवमेंट में कि ऑर्डरली ब्रिटिश विड्रॉल, मतलब आप छोड़ के जाइए, लीव द कंट्री, वी विल रूल, है ना, दैट इज द आइडिया एंड ऑल. ओके, दैट इज व्हाट यू शुड नो. तो इसमें और डिटेल नहीं जाना है. देन यस, ऑन 8 नवंबर 1942, मतलब आफ्टर few months, 2-3 months back later, 8 अगस्त को हुआ था ना मूवमेंट, हो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लेटर 3 months later कांग्रेस ने अपना कुछ 10 ड्यूटीज निकाला था, जैसे कि आप विंडो पे ट्राई कलर लगाओ, these are the things, do not enter the courts, do not purchase foreign goods, है ना, boycott the foreign servants of British government, leave the cities and go to villages. So these are the things that were there. एक दो चीज और थी, कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट को किसने सपोर्ट नहीं किया था. मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा डिड नॉट सपोर्ट और अपोज इट, मतलब ये सब जस्ट रिमेंबर इट, दे वर नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट. ओके, देन यस, ये मैंने बता दिया कि जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ऑल द प्रोमिनेंट लीडर्स वेयर बिहाइंड द बार्स. ओके, गांधी जी वाज अरेस्टेड, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद एंड ऑल वेयर अरेस्टेड एंड सेंट टू द जेल. So by and large it became a leaderless movement because सारे लीडर तो अरेस्ट हो गए. अब उसके बाद क्या हुआ, it is said, है ना, on Gandhian method. Why? Because quit India movement में we had seen violence also happening. So मतलब उतना जिस तरह नॉन कॉपरेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन वायलेंस की बात हुई, that was not seen in quit India movement. We have seen a lot of places where there were violence we had seen. Okay, so that is what you should know because गांधी जी ने do or die का statement दे दिया. ठीक है, so it was not strictly non-violent, आप समझ सकते हो. That is what you should know. हाँ, और बहुत सारे लोग हैं, there were many leaders that participated in this, है ना, JP नारायण, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता, इनका मेरे बहुत फेमस है. जैसे वुमेन्स मूवमेंट होता ना है, उसमें क्या वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें एक नाम आता है उषा मेहता का. She ran an underground radio station that was called as Congress Radio. देखो, अब आप बोलोगे सर रेडियो का क्या महत्व है. देखो, आज के जमाने में मीडिया क्या होती है ना, so we have TV, न्यूज, so सोशल मीडिया, इसी से ना न्यूज स्प्रेड होती है. जो भी न्यूज है, कई बार स्प्रेड, फेक न्यूज भी स्प्रेड होती है, बट दैट इज हाउ these are the media. उस जमाने में ये सब थोड़ी होता था, यही था सब कुछ. रेडियो वाज एवरीथिंग. यू वांट टू सेंड द सिग्नल, तो बेसिकली अगर आपको अपनी बात फैलानी है, if you have to spread your version, है ना, among the people, then you have to speak in the radio and all. रेडियो या न्यूज़पेपर होता था उस टाइम पर, है ना. क्लैंडस्टाइन मतलब होता है सीक्रेट, क्लैंडस्टाइन रेडियो स्टेशन, ऐसी जगह जो आप ब्रिटिश पहुंच नहीं पाएगी, कहां से ये रेडियो रिकॉर्ड हो रहा है. ठीक है, सो उषा मेहता जी ने अपना एक रेडियो, अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलाया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर, है ना, टू डिसेमिनेट द न्यूज एंड स्प्रेड, टू काउंटर द ब्रिटिश प्रोपेगेंडा आल्सो, है ना, कि ब्रिटिश को काटने के लिए, ब्रिटिश के आइडियाज को काउंटर करने के लिए. That was made. ठीक है, that is what you should be knowing about, है ना. So Usha Mehta was a 22-year-old law student inspired by Gandhi ji organized Congress Radio and underground radio. आज पद्मा अवार्ड्स की न्यूज आई. पद्मा अवार्ड्स अनाउंस कर दिया था 26 जनवरी को. अवार्ड दिया जाता है लेटर ऑन. ठीक है, so we have already taken a class on Padma Awards. ठीक है, award is given later on, but announcement 26 जनवरी के आसपास होती है, around Republic Day and all. ठीक है, so those we have already covered that. ठीक है, अच्छा मूवी भी है क्या उषा मेहता पर? ओके, I was not knowing this. ठीक है, ओके. क्विट इंडिया मूवमेंट में पैरेलल गवर्नमेंट्स भी चलाए गए. बलिया यूपी में जगह है, तामलुक एंड सतारा, ये सब जगह में, आई थिंक सतारा इज इन महाराष्ट्र, है ना भाई. मतलब ये कि पैरेलल गवर्नमेंट में जैसे चित्तू पांडे है, तो उन्होंने कहा कि मेरा अपना गवर्नमेंट यहाँ चल रहा है. तामलुक बंगाल में जातीय सरकार नाम से, है ना, सतारा में प्रति सरकार. सो दे रन पैरेलल गवर्नमेंट आल्सो इन क्विट इंडिया मूवमेंट कि वी हैव बिकम इंडिपेंडेंट इन आवर प्लेस, है ना. ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. ओके, उसके बाद क्या हुआ कि द वेज दे आर सप्रेस्ड. तो सप्रेस कैसे किया? दे अरेस्टेड, मास अरेस्ट, बहुत लोगों को अरेस्ट कर लिया, सारे मेन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया. दिस इज द मेन वे ऑफ सप्रेसिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट बाय ब्रिटिश. ब्रूटल रेप्रेशन लिखा है ना, एंड द अरेस्ट ऑफ की लीडर्स. ओके, है ना. नाउ यस्टरडे क्लास में वी हैड डन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सो नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. ठीक है, सो दिस इज द CLAT 2025 पेपर. प्लीज रीड इट.
I'll give you 2 minutes and then I will give you questions. पढ़ो, देखो अब आप इधर उधर मत देखना, ठीक है? आप एकदम क्वेश्चन पे ध्यान दो. इमेजिन करो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे, आपके पास क्वेश्चन आ गया and you are given 2 minutes to read. 2 minutes क्या, 1.5 minutes I'll give. Please read it. जैसे ही आप पढ़ लोगे, write done. Read? पढ़ लिए? Done? Nobody is writing done. I think you all have read it. Yes, fine. So let us begin with the first question. अब इसको आंसर करने के लिए आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत है, बताओ. Do you need passage to answer this question? ये मैंने पढ़ा दिए, तो आपको पता होना चाहिए. तो आपको बिना पैसेज पढ़े भी अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते तो बन जाता. Yes, the right answer is, है ना, डांडी मार्च. नो नीड फॉर रीडिंग पैसेज. पता नहीं पैसेज में है भी कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, पर चलो हो सकता है कि डांडी मार्च लिखा होगा. नहीं भी है तो आपको डायरेक्ट कर देना. अब बताओ, which of the following is true? अब जब इसमें ट्रू या फॉल्स लिखा है तो ध्यान से पढ़ना, मुझे कहीं कहीं पे फॉल्स लिखा होता है, ठीक है? तो अब कुछ तो आप खुद ही जानते हैं. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अ सक्सेस 1931 वाला नहीं था. वर्क वाज रिजेक्टेड. रिजेक्टेड तो नहीं लिखा है. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. इंडियन इंडस्ट्रीज वर कंसर्न्ड अबाउट डिसरप्शन ऑफ बिजनेस, है ना, तो वहीं पे लिखा तो है. prolonged disruption of business, एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है? दैट इज व्हाट यू शुड. और एक चीज और मैंने बताई, अगर दो सिमिलर ऑप्शन होता है ना, देखो ये दोनों ऑप्शन थोड़ा सिमिलर लग रहा है, तो उसमें चांस ज्यादा होता है कि आइदर ऑफ द टू विल बी द राइट, ठीक है? सो बी इज द राइट आंसर हियर. फाइन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रेडिकेमेंट ऑफ कांग्रेस? बताओ. ऑप्शन बी ए होगा ना, डेंजर ऑफ डिवीजन ऑफ अपोजिशन टू द ब्रिटिश. यानी ब्रिटिश को अपोज करने में जो जो लोग थे वो आपस में टूट नहीं जाए. प्रेडिकामेंट मतलब एक तरह से चैलेंज के सेंस में यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे लिखा होगा, दिखा दे. Did participate in the civil disobedience movement, selectively adopting some of the ideas of Gandhi, है ना? But the Congress was reluctant to include workers' demand as part of its program of struggle. It felt that this would alienate industries and divide the anti-imperial forces. Divide the anti-imperial forces. यानी ब्रिटिश के अगेंस्ट जो जो लोग खड़े हैं सब यूनाइटेड होना चाहिए. लेकिन कांग्रेस को फियर था कि मे बी डिमांड स्प्लिट हो जाए, इसलिए कहीं कहीं उन्होंने वर्कर्स की डिमांड नहीं इंक्लूड की, ठीक है? So that was their fear. So A is the right answer. Now the next one, question number 28. Correct. देखो करेक्ट पूछा ना, with reference to civil disobedience movement. When will notification come? I think जुलाई अगस्त में आ जाना चाहिए अभी मेरे ख्याल से. जब भी आएगा ना, so we'll put the video. ठीक है, nothing to worry.
मिलिटेंसी में होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो नॉन वायलेंट था, ये तो होगा नहीं। Yes, civil disobedience movement was started by what? Dandi March, sword law. ये तो था मेन चीज। इसमें भी पैसेज पढ़ने की जरूरत है, तो यू नीड टू रीड द पैसेज। इट ऑल द इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सेप्ट सोशलिज्म, नहीं ऐसा तो नहीं था कि सोशलिज्म जबरदस्ती करवाने के लिए ना। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, शॉर्ट लॉ की बात ही कही थी। द नेक्स्ट वन, which among the following mass movement was supported by Indian industrialists? भाई जिसकी आप पैसेज में बात करोगे वही आंसर होगा, कॉमन सेंस। इस पूरे पैसेज में क्या किसकी बात हो रही है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक, है ना, सपोर्ट द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक कॉलोनियल कंट्रोल एंड सपोर्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साफ लिखा हुआ है। अब जिसकी बात करोगे इसी की बात ही, और तीनों की बात ही नहीं हो रही पैसेज में, है ना। ऑफ कोर्स यू कैन से दे आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन बी, दे आर टॉकिंग ओनली अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये सब क्वेश्चन छूटने का है, फ्री का मार्क्स है, right? So in the examination hall, you should not miss this. The next, which of the following can be considered as a major outcome of civil disobedience movement? होम रूल मूवमेंट अलग है, 1916 में था, that is different. That was led by Annie Besant and बाल गंगाधर तिलक, वो अलग। देखो अब ऐसे सोचो, गैल्वेनाइजिंग वुमेन, नीचे में देखो वुमेन्स पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, यानी ऑप्शन ए तो होगा पक्का, ये ऑप्शन बी तो होगा। सोशलिस्टिक इन्फ्लुएंस अमंग कांग्रेस का, पूरा सोशलिज्म की बात ही हो रही है, सोशलिज्म अमंग यंगर मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, यस, तो वो भी था। चला गया, तो ये भी होगा। पार्शियल सपोर्ट फॉर वर्किंग क्लास की बात हो रही है, सो ऑल द दीस द राइट आंसर, है ना। तो सब वर्किंग क्लास की भी कहीं बात हो रही होगी, आप देखोगे। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट नागपुर, है ना, इन लार्ज एक्सेप्ट नागपुर, क्या मतलब हुआ कि वर्किंग क्लास नागपुर के हर जगह नहीं पार्टिसिपेट किए, लेकिन नागपुर में किए, तो पार्शियल सपोर्ट हुआ ना, कुछ तो वर्किंग क्लास की बात हुई ना, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट कि पार्शियल सपोर्ट, यस, नागपुर में सपोर्ट मिला था वर्किंग क्लास का। सोशलिज्म की बात हो रही थी, वुमेन की बात हो रही थी, लास्ट मतलब साफ मेंशन्ड है, तो द आंसर इज डी। ठीक है, ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट कि इतना मुश्किल नहीं एग्जाम निकालना, दिस इज वेरी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू क्वालिफाई द एग्जाम। यू हैव टू रीड इट, आप पैसेज रीडिंग की प्रैक्टिस करो, एंड द बेस्ट वे इज स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर बाय योरसेल्फ। अगर आप रीडिंग अखबार पढ़ना शुरू करोगे इंग्लिश का, तो आपको पैसेज रीडिंग फास्ट होगा, एंड दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, so this is all about today's class. Thank you everyone, please press the like button, share this video. Thanks for watching, have a nice day.